Now the applications of the software testing. We have already discussed this point. First is the cost effective development, product improvement, test automation, quality check. So what are the different applications for the software testing? The first is the cost effective development. Okay, the testing is required. Suppose if we think that our product must be cost effective, so we always try to do the software testing for the better performance of the particular product which is going to be launched into the market. Another is the product improvement. Whenever we are thinking to improve or to update the product as per the need of various organization or the product for which we are going to develop. So time to time there is a need arise to update that particular software. Okay, so each and every time we do the software testing, suppose if we are going to update or to add or sometimes to delete some functions at the component level or at the unit level. Okay, so sometimes we need that if the improvement is needed or required by the company or by the organization or by the institute, then we add some functions to get better result. Then for that, we always do the testing of the product. Test automation. So such type of we need the test automation at very starting, means at the initial stage or sometimes during the change whenever we need it or required by the company. So this is the criteria or we can say the method that need the automation, that different type of tests are needed at different phases. Quality check. So whenever we do the testing, then it is directly proportional to the quality. Whenever the updation needed, or sometimes we want to reduce or delete some functions which we are not going to use or not used by the user, then we think that sometimes to improve the efficiency of the software or to reduce the memory required to install for a particular software, then we always use quality check. Okay, so at each and every stage, the quality will be checked. Okay, through the testing of various softwares. So these are the various applications of software testing, so that we can make our product cost effective, product improvement, test automation, and quality check. So these are the major applications of software testing. Now these are the properties we have already discussed yesterday, but due to the disturbances, we are unable to understand this in a better way. So properties of software are the functionality, reliability, usability, efficiency, maintainability, portability. So these are various characteristics for a particular software that we are going to develop. Okay, so functionality, that each and every software consists of a number of functions, and as per the functions our software works. Reliability means no failure at all, fault free software. Okay, it must be reliable, or sometimes under any emergency, if any failure occurs or it consists of fault, then there must be other ways so that the fault must be corrected instantly. Okay,
or we can use some substitute or the alternate ways to run our software without disturbing our work. Okay, so the software must be reliable. Usability. Usability means it consists of a number of functions and we are able to use those functions as per requirement. Okay, similarly, other word related to the usability is the reusability. Means again it consists of a number of functions or characteristics so that, or we can say the procedures, so that we can recall those functions for the development of another software. Okay, so that we can use the ready-made functions or the procedures. That is called the reusability. Reusability of a software. So sometimes we are not going to use the complete software. Okay, then if we are going to develop any software, we can use some ready-made functions or procedures from the old one. That is called the reusability. Usability, whatever we are going to develop and we are able to use those functions, okay, means there are no so much dummy functions there. Otherwise, it will require more memory and your software, we cannot say it is efficient. Efficiency means we can operate the software easily, more efficient, have good performance, maintainability. We are able to maintain our software as per requirement. Okay, or whatever we have the functions of procedure, or what is the hardware requirement for a particular developed software, or we can say the software requirement for the designed software which you are going to install, so that we are going to maintain that easily. It has or consists of a number of functions so that the programmer or the manager can maintain the developed software. Portability, it is the software, it can be run from one machine to another without any change, or the change required very little bit. Okay, so the minor changes are required if we are going to run the same software on another machine. That is called the portability. So that our software is portable. We can run or we can use on all type of machines. Okay, without any change in that software, or sometimes minor changes are required. So that is called the portability. So these are various characteristics of the software which we are going to develop for a particular organization or the company or the institute or for a big user. So what is the testing? Testing is the process of evaluating a system or its component with the intent to find whether it satisfies the specified requirements or not. Okay, so testing means whenever we are going to develop any software for a dedicated organization, then each and every function, okay, that is contained by a particular software, those functions are able to do special, we can say the task. Okay, so that we are going to test it at unit level or the component level, so that we can check whether we are able to get the concerning output or not. Okay, as per the input. So this is called the testing. So we are going to test at each level, that is we will start at the unit level or we can say the component level, so that we can check or test it at very lower level. Okay, so if the software means developed by you
satisfies the specified requirements of the organization. Okay, if it is working properly, then it is called that your product is finally tested. Okay, before launch to or handed over to the organization. Who does testing? Testing कौन कर सकता है? तो software tester. Okay, that is called the software testing engineer. Software developer, that is the person who is developing the software, then he have good experience as well as well versed, have good knowledge, then he can also test the software. Okay, project lead or manager. So special training is required for the project lead or the manager so that he can also test the same software easily. Means, or also last one is the end user. Okay, means after completion of the software, the end user can also testify the software. Okay, so who does testing? Then software tester, means special software engineers, or we can say testing engineers. Second is the software developer, project lead or manager. Okay, means the project manager or project leaders. End user means you can also test the software, means the software developed for you, and you can also test the same software with the help of the testing engineers, or sometimes training is needed for you so that you can handle easily all those testing tools so that you can test the different type of softwares. So at the initial level or primary level, some sort of we can say that training is needed. Okay, for 1 month or 15 days or 2 months, it will depend on the type of the project. When to start testing? Testing कब start होना चाहिए ये देखते हैं हम लोग. Testing is done in different forms at every phase of SDLC. Okay, means here during the requirement gathering phase, at the starting we have number of phases. SDLC, what is this? Software development life cycle. Okay, so software development means whenever we are going to design this or developing any software, then we divide into different number of phases. We do the analysis, we do the verification, okay, for each requirement. Then we collect all the information during testing, or here at the initial level, we can also test at each unit or at component level. Okay, so reviewing the design in the design phase. So in the design phase, because we always divide our software into number of phases at the design level, then again we can review all those phases at the design level with the intent to improve the design. So sometimes we can also improve the design, okay, and we can consider is as the testing phase. So sometimes during the design phase, again some improvement is needed. So we can also call that phase as the testing phase. Okay. Sometimes we are going to add more number of functions. Okay. We are developing our software more user friendly. Then again, we have to improve that phase. Then we can call it as the testing phase. So testing performed by a developer on completion of the code is also categorized as testing. Again, now you can check because we have the three phases. First is called the design phase, second is called the coding phase, third is called the testing phase. So testing phase is separate for testing all type of softwares at
each level, that is at unit level, component level, module level, subsystem level, or the system level. But before that, we have two other phases, that is called the design phase and coding phase. Okay, so during the design phase, we can review all those design which has already been done by the programmer or the developer. Then if we are going to improve that phase again, or we are going to review that phase, then that can be treated as the testing phase. Okay, so we have even testing phase at the final stage, that is design code test. Okay, but during the design phase, if we are going to improve that, then again that can be treated as the testing phase. Similarly, second phase is called the coding. Okay, so the coding, whenever we are going to improve our design, or as per need of any organization, just we are adding some more functions of the procedure to improve the design, then it is obvious that the coding will change again. Okay, suppose you are improving your design, means the coding will change again. It means again we are going to review the coding phase, that can be treated as the again testing phase. So on each phase, during the review of the procedure, that can be treated as the testing phase. Okay, so here we can say there are several ways so that the we can start the testing. Even final phase is the testing phase, but during the design and during the coding phase, always treated as the testing phases. Okay, so at each level we can test. So this is called the software design, software development life cycle. Okay, now when to stop testing? Testing हमें कब रोक देना चाहिए? So there is a testing deadlines. Okay, so on whenever we are going to develop any software, then there is a deadlines for the testing phase. Otherwise, when we have to launch our software, so everything have some deadlines. So testing, there must be a testing deadlines. Second, completion of test case execution. If we are testing at the unit or the component level, then at the unit and component level, we can also do the control testing or the looping testing. Okay, loop testing. So after completion of that phase, that is the completion of the test case execution, means loop testing or control testing, we can also do during the unit and component level or the module level. So after completion of the test case execution, we can execute or check those cases. Okay, so we can here stop our testing. Now completion of functional and code coverage to a certain point. So again, whenever we are going to complete any functional or code coverage, then we can stop our testing. So we can do the testing at the unit level or the component level or the module level. Then after completion of each function, or we can say the test case execution, we can stop our testing. Bug rate falls below a certain level and no high priority bugs are identified. So whenever we are compiling our program or we are going to test our program, then we have to check the bug rate. Okay, bug rate means your program have some errors. Okay, so bug rate means just you are going to reduce the errors in your program. Now there are several types of errors. Okay, you are already aware maybe. So bug rate falls below a certain level. Now here we will check that what is the level of the errors, whether it is more than 80% or less than 80%. Then we have to check the bug rate. Okay,
and no high priority bugs are identified. So here we are not going to identify whether the bug rate have the high priority or the low priority. So here there is no any game of the high priority or the low priority. Last one is the management decision, or if there is a decision of the management that please stop now testing. Okay, it is sufficient. It is okay. The bug rate is 90 here, 95% or 98%, and sometimes less than 5%. There is a bug in your software. Then okay, no problem, because at the each level, unit level, component level, module level, subsystem level, we have already checked our software. It is working properly and it is fulfilling the requirement as per a specification of the software. mm, Means the company who is requiring your software, then the management can decide that please stop testing, because we have no so much time and it is already fulfilling the criteria of that particular organization. Okay, and if some sort of problem will come in the future, then we can handle, because there is a deadline for a particular software development, or the time to hand it over to the organization, then the management have right to decide that he can stop the testing. Now again there is a verification and validation. This is also the part of the testing. So whatever we are going to develop for a particular organization, then this is our right of the developer or the programmer. We have to verify at each and every stage, or at each and every phase, and then we have to validate, okay, the functions we have already developed, whether they are working as per specification or not. So what is the difference between the verification and validation? Now we can clarify here. So verification addresses the concern. What here? Now are you building it right? Okay, are you building it right? क्या आप इसे सही बना रहे हैं? ठीक है, जो आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो वो आप सही डेवलप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. सेकंड, व्हाट इज द वैलिडेशन? आर यू बिल्डिंग द राइट थिंग? क्या आप सही चीज बना रहे हैं? ओके, यानी कि एक बात आपने ये देखी, सॉफ्टवेयर एक आप अपनी मर्जी से डेवलप कर रहे हैं, एक आपने बनाया किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो सारे स्पेसिफिकेशन फुलफिल हो रहे हैं. ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है, आपने सारे स्पेसिफिकेशन फुलफिल किए, उसके अलावा आपने और इम्प्रूवमेंट उन लोगों को करके दिया. ठीक है, और फ्यूचर एक्सटेंशन. So this is the minor difference between the verification and the validation. तो आपने verify किया सारे functions को, it is working properly, and validate आप कर रहे हैं, आपने उस particular company के लिए सही चीज़ बना के दी. Okay, are you building the right thing? क्या आपने सबसे पहले प्राइमरी लेवल पे क्या होगा, आपने जो प्रोडक्ट डेवलप किया है जिस कंपनी के लिए, तो उन्होंने जो जो चीज़ें कही थी, जो उन्होंने बातें बताई थी, तो उसके तहत आपने डेवलप किया है, वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है. ठीक है, ओके, गुड. वैलिडेट आपने कर दिया. वेरिफिकेशन आपने किया किया, आर यू बिल्डिंग इट राइट? क्या आपने ये सही बनाया था? तो देयर इज ए लिटिल बिट डिफरेंस हियर, ओनली लिटिल बिट डिफरेंस. लिटिल बिट डिफरेंस क्या है? किसी कंपनी के लिए आपने बनाई, कोई कोई प्रोडक्ट बनाया, तो एज पर स्पेसिफिकेशन बनाया या नहीं बनाया. ठीक है, और एक ये चीज़ है, आपने कोई चीज़ बनाई तो, लेकिन सही चीज़ बनाइए. कभी ऐसा होता है वैलिडेट आपने नहीं किया, तो आपने बहुत अच्छी चीज़ बना के दी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या कोई ऐसा क्राइटेरिया रह गया जो एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं है. ठीक है, हालांकि सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है, लेकिन एक आध चीज़ की ज़रूरत हुई तो आपको फिर अपडेट करने की वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी. तो दिस इज द लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन. So here the very good example, so that you can understand easily. Are you building it right?
or are you building the right thing? So this is only the difference between the verification and validation. So this is again under the testing phase. Okay, so testing here, if you are doing the testing for a particular product, then we have to verify and validate the particular software. Okay, now there are few myths about the software testing. ओके, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कहते नहीं है आपके बातें होती हैं जो होती हैं भाई, जैसे क्या ये चीज फ्रूटफुल है या नहीं है। ठीक है, तो बहुत से मिथ होते हैं, अपने अपने आइडियाज देते हैं भाई, नहीं ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए भी हैं, देयर आर कॉमन मिथ्स अबाउट द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो फर्स्ट इज दी टेस्टिंग इज टू एक्सपेंसिव। ओके, तो पहला यहाँ पर मिथ जो है आपका वो क्या है, एक क्राइटेरिया यहाँ पर बना हुआ है क्या, टेस्टिंग जो फेज होता है आपका काफ़ी महंगा होता है। टेस्टिंग इज टू एक्सपेंसिव, बहुत महंगी होती है। टेस्टिंग इज टाइम कंज्यूमिंग, ये कह रहे हैं टेस्टिंग टाइम कंज्यूमिंग होती है यहाँ पर, और टाइम लगता है। ओनली फुल्ली डेवलप्ड प्रोडक्ट्स आर टेस्टेड, ये कह रहे हैं अगर खाली अगर पूरी तरीके से डेवलप्ड प्रोडक्ट हैं वही टेस्ट होना चाहिए। ओनली फुल्ली डेवलप्ड प्रोडक्ट आर टेस्टेड, वही टेस्ट किए जाते हैं जो फुल्ली डेवलप्ड होते हैं प्रोडक्ट। Complete testing is possible. Okay, ये टेस्टेड सॉफ्टवेयर इज बग फ्री। अब कुछ कहते हैं भाई जो टेस्टेड सॉफ्टवेयर होगा वो बग फ्री होगा। बग फ्री मीन नो एरर एट ऑल, नो फॉल्ट, नो फॉल्ट टॉलरेंस यार कहना चाहिए, यानी कि बग फ्री है, वहाँ पर कोई एरर नहीं है यहाँ पे। ये टेस्टेड सॉफ्टवेयर इज बग फ्री, फॉल्ट फ्री। ओके, तो मिस्ड डिफेक्ट्स आर ड्यू टू टेस्टर। तो यहाँ पर फिर दूसरा यहाँ पर लोगों ने कहा जैसे मिस्ड डिफेक्ट्स, कुछ भी डिफेक्ट्स अगर मिस्ड हो रहे हैं आर ड्यू टू दी टेस्टर्स, यानी कि अगर मिस कर दिया आपने कोई भी डिफेक्ट तो वो टेस्टर की गलती है यहाँ पर। ठीक है, आर ड्यू टू टेस्टर्स, टेस्टर्स ने गलती करी है, यानी कि उन्होंने ओवरकम उसे वो कर दिया, ओवरलुक कर दिया है। ठीक है, ध्यान से नहीं किया है, तो कुछ डिफेक्ट्स उसके अंदर रह गए, कुछ फॉल्ट्स रह गए, कुछ एरर्स रह गए। टेस्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर टेस्टिंग नहीं होगी, ठीक है, तो टेस्टर्स रेस्पॉन्सिबल होंगे क्वालिटी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो उसमें क्या रहेगा आपका, टेस्टर यानी कि टेस्टिंग इंजीनियर्स आर ओनली रेस्पॉन्सिबल। क्वालिटी हमेशा कहाँ पर डिसाइड होगी, डिज़ाइन इंजीनियर ने डिज़ाइन कर दिया, कोडिंग इंजीनियर ने कोडिंग कर दी सॉफ्टवेयर की, टेस्टिंग इंजीनियर लास्ट में फाइनल में रेस्पॉन्सिबल होगा फॉर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो इसका मतलब ओनली टेस्टिंग इंजीनियर इज रेस्पॉन्सिबल। तो नौकरी पे गाज किसकी गिरेगी, टेस्टिंग इंजीनियर पे गिरेगी, उसने प्रोडक्ट होके कैसे कर दिया वहाँ पर। समझ रहे हैं भाई? तो ये दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मिथ्स, मीन्स इसके लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, क्या क्या हम कर सकते हैं इसमें। टेस्ट ऑटोमेशन शुड बी यूज्ड वेर एवर पॉसिबल टू रिड्यूस टाइम। टेस्टिंग टेस्ट ऑटोमेशन होना चाहिए, ठीक है, टाइम को रिड्यूस करने के लिए, यानी कि हमें हर लेवल पर मेंटेन करना चाहिए टेस्टिंग, जिससे हमारा टाइम रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, टाइम इतना फिर स्पेंड नहीं होगा अगर हम फाइनली किसी प्रोडक्ट को टेस्ट करने जा रहे हैं। ओके, इफ वी आर गोइंग टू टेस्ट फाइनली टू एनी प्रोडक्ट देन इट मे टेक मोर टाइम, or if you are doing the testing at each level, at function level or at unit or component level, then the final time must be less than the required time for a particular at the function level. Anyone can test a software application। फिर यहाँ पर एक मिथ ये बना हुआ कोई भी टेस्ट कर सकता है, जैसे उसमें दिया था उन्होंने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अलावा आपका सॉफ्टवेयर मैनेजर भी चेक कर सकता है, टेस्ट कर सकता है, एंड यूज़र भी आपके सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ किसी ने क्या कहा, एनी वन कैन टेस्ट ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, कोई भी टेस्ट कर सकता है, बशर्ते क्या है कंडीशन आपको, यानी कि एक स्पेशल ट्रेनिंग मस्ट बी रिक्वायर्ड फॉर ए टीम, यानी कि किसी भी टीम को आप अगर ट्रेनिंग दे रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा उसे, यानी कि स्किल्ड प्रोग्रामिंग के ज़रिए कोई आपको ट्रेन करना है एक पर्टिकुलर ग्रुप को, तो वो टेस्टिंग कर सकता है। ठीक है, ये टेस्टर ओनली टास्क इज टू फाइंड बग्स। फिर किसी ने ये कहा
टेस्टिंग का मतलब खाली बग्स निकालना, यानी कि एरर को निकालना होता है बस। ये टेस्टर्स ओनली टास्क इज टू फाइंड बग्स, ठीक है। टेस्टिंग एंड डीबगिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? टेस्टिंग क्या होता है, डीबगिंग क्या होता है? तो टेस्टिंग आपको मालूम पड़ गया, अभी तक ये पढ़ते चले आए हैं आप टेस्टिंग क्या है, ठीक है। इसमें आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं खाली एरर को या डिफेक्ट को या बग को। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग बग, एरर, डिफेक्ट, फॉल्ट इन ए सॉफ्टवेयर विदाउट करेक्टिंग इट। So during testing, you are not going to correct the fault. You are not going to correct the defect or error or bug. Okay. With the help of the different type of testing tools, we are able to know that during testing, we find that our program have so much errors. Okay. But what is the debugging? It involves identifying, isolating, and fixing the problems or bugs. Okay, so during the debugging, we are again using some tools so that we are able to recover those errors. Okay, so debugging means just you are going to identify and isolate and fixing the problems or bugs. ओके, यहाँ पर आपने क्या किया, आइडेंटिफाई भी किया, आइडेंटिफाई करने के बाद में आइसोलेट कर दिया आपने, उसे अलग कर दिया उस पार्ट को। उसके बाद क्या करा, फिर आपने फिक्सिंग दी प्रॉब्लम्स और बग्स, उसके बाद फिक्स कर दिया उसे, यानी कि सही कर दिया आपने। Okay, so that is called the debugging. So this is the difference between the testing and the debugging. Testing क्या है, खाली आपने एरर वहाँ पर निकाल दिए, एरर निकाले, डिफेक्ट निकाले, फॉल्ट निकाले, ठीक है, लेकिन उसे करेक्ट नहीं किया। टेस्टिंग में सिर्फ आप टेस्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसमें बग, एरर, डिफेक्ट, फॉल्ट निकाल रहे हैं, बट यू आर नॉट गोइंग टू करेक्ट दो, यू आर नॉट गोइंग टू रिकवर those defects or error or faults or bug. Okay, so this is the difference between the testing and debugging. Now software testing techniques, what are the different techniques? So software testing is a critical element of a software quality. तो जब भी हम क्वालिटी की बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात करेंगे। ओके, तो मींस सॉफ्टवेयर क्वालिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। इसलिए एक मिथ ये भी दिया हुआ था आपका, सब चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी किसके ऊपर है, टेस्टिंग इंजीनियर के ऊपर है। ओके, बिफोर लॉन्चिंग एनी सॉफ्टवेयर देन इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टेस्टिंग इंजीनियर दैट ही कैन मेंटेन द क्वालिटी। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक्स में आपका ये आ जाएगा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ ए क्वालिटी एश्योरेंस का। ओके, एंड अल्टीमेट रिव्यू ऑफ स्पेसिफिकेशन, डिजाइन एंड कोडिंग। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप रिव्यू कर रहे हैं स्पेसिफिकेशन, यानी कि जो भी कंपनी ने आपको स्पेसिफाई करने का बताया, भाई ये चीज़ें हैं स्पेसिफाई कर दी, उसके अकॉर्डिंग जस्ट यू आर गोइंग टू डेवलप द सॉफ्टवेयर। ओके, एंड एज पर नीड और द रिक्वायरमेंट जस्ट यू आर गोइंग टू डिजाइन एंड कोड। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डेमोस्ट्रेट द सॉफ्टवेयर फंक्शन अपीयर टू बी वर्किंग अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन। तो अगर कोई भी सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किया है वो एज पर स्पेसिफिकेशन वर्क कर रहा है, मीन्स गिविंग you the better performance if you are going to fulfill the requirements of the organization. A good test case is one that has high probability of finding and undiscovered error. तो बहुत सी ऐसी एरर्स होती हैं जो डिस्कवर नहीं की जा सकती हैं, और कुछ आपने सॉफ्टवेयर टूल्स के ज़रिए अगर उन एरर्स को भी निकाल लिया आपने, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक्स। So these are called the special techniques, so that you are able to discover all those errors, or we can say the unbug आप कर रहे हैं उन एरर्स को जो जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है फाइंड करने की। तो एक गुड टेस्ट केस इज वन दैट हैज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एंड अनडिस्कवर्ड एरर, ठीक है, जो आपको नहीं इस चीज़ को निकाल सकते थे उन एरर्स को, वो भी आपने फाइंड कर लिया। तो दीज आर कॉल्ड द स्पेशल टेक्निक्स और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक्स। ओके, नाउ दिस इज वन ऑफ द हियर block diagram, you can check for the
Now it is divided into different type of static, informal reviews, walkthroughs, technical reviews. So this is the way how you are going to test the product. Static analysis, you are doing data flow, control flow. Okay, dynamic here. This is the static and this is the dynamic data flow. So this is the structure based, specification based. Okay, so again structure is divided into statement, decision, condition, multiple choice. Now here experience based means error guessing. आप error guess कर लेते हैं, खाली आपने कोडिंग देखी तो आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ क्या कर रहे हैं. तो these are called the experience based. तो एक्सपीरियंस बेस्ड है, ये आपका कितना तजुर्बा है आपको पहले से ही कोडिंग करने का. तो उसमें आप खाली देखने से ही आपको बहुत सी चीज़ें पता लगा लेते हैं, भाई ये चीज़ हमने गलत कर दी या टाइपिंग मिस्टेक कर दी, सो दैट यू कैन रिकवर दोज एरर इजीली जस्ट बाय गेसिंग. तो और एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग कहलाती है, इसी से रिलेटेड होती है, दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस. So with the help of the experience, you can discover all such type of error with the help of the guessing or exploratory testing. So specification based again divided here equivalence partitioning. Just you are going to divide your code into different part. You are doing the partitioning, that is called the equivalence partitioning. Now another thing is called the boundary value analysis. Okay, so that it is mathematics based. We will apply some path testing here. Decision tables. It also consists of a number of decision tables. State transition. Okay, state transition means just you are changing your state from one state to another state, because you are going to divide your problem into number of states. Okay, so with the help of the state transition diagram, you can also judge, and it is based on the specification phase. Use case testing. So there are various criterias of the testing. Okay, now with the help of the experience, or we can say it is whether you are choosing the static or dynamic based. So static means you are going to divide in formal reviews or static analysis. Now I am taking your attendance due to the less than 1 minute we have from me. So any question, please? Now we have